इन द सैनिक स्कूल बेटा, सैनिक स्कूल में आपके पास 25 क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास बेटा सैनिक स्कूल में 25 क्वेश्चंस आते हैं जीके के, जिसमें से आपके 12 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 13 क्वेश्चंस जीके के। ओके, या फिर इसकी वेटेज इस तरह से रहती है, साइंस के 13 और जीके के 12, मीन्स टोटल आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं इंटू 2, मीन्स ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। 50 मार्क्स आपके जीके पार्ट के होते हैं सैनिक स्कूल में। ओके, सैनिक स्कूल में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से साइंस के 12 क्वेश्चंस होते हैं, जीके के 13 क्वेश्चंस। ओके, इस तरह से इसकी वेटेज रहती है और आपके हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स फॉर साइंस पोर्शन। So let me discuss question number 1. Which feature helps a coconut fruit to float in water? जो कोकोनट होता है बेटा वो कोस्टल एरियाज में मेनली ग्रो करता है, मींस सी के अराउंड, वाटर के अराउंड। तो बेसिकली जो इसका फ्रूट होता है वो क्या करता है, वाटर बॉडीज में फ्लो करता है और जहां भी ये रुकता है वहीं पे ये क्या होना शुरू हो जाता है, ग्रो। इसकी जर्मिनेशन बेटा इस तरह से होती है, देखिए। अब ये जो इसका पार्ट है ये किस में फ्लो करता है, वाटर में फ्लो करता है। अब ये वाई विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर, कौन सा ऐसा फीचर है कोकोनट में जो इसको फ्लो कराने में हेल्प करता है वाटर में। इट हैज अ फाइब्रस आउटर कवरिंग, और स्पॉन्गी पार्ट मीन्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रेजेंस ऑफ हुक मीन्स इसके पास हुक होती है, या फिर प्रेजेंस ऑफ स्पाइन इसके पास कांटे होते हैं। नैतिक, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? Which feature helps a coconut fruit to float in water? Why it float in water? Varun, can you answer? Are you able to answer this question? Fibrous outer covering. Very good, because it has fibrous outer covering which allows to do not absorb the water into the coconut, so that's why it can flow into the water easily. Okay, your second question is, which one of the following is a non-communicable disease? Shreyansh, can you tell me chicken pox, common cold and measles are which disease? Ma'am, these three are communicable disease. Very good. These are And communicable disease. These are also viral And disease. and ma'am, beriberi is not communicable disease. Very good. Ma'am, Beriberi is a vitamin no. It is मैम caused by. विटामिन बी की कमी से होती है। Very good. It is a deficiency disease which cannot be spread from one person to another. It is a non-communicable disease. Okay. And chickenpox, common cold, measles, these all are called viral disease and these are called communicable disease. Viral disease can spread from one person to another, but deficiency disease cannot spread from one person to another. So these are called beriberi is a non-communicable disease. Who can tell me which is the Swerit? Can you tell me deficiency of vitamin C causes? Okay, Natik, can you tell me the deficiency of vitamin C? विटामिन बी। I said vitamin C. Deficiency of vitamin C causes. Who can tell me all non-communicable disease, names of all non-communicable disease? Shreyansh, can you tell me the names of all non-communicable disease? Tell me quickly. मैम मैम विटामिन बी की डिफिशियंसी से मैम नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डिफिशियंसी से
बेरी विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी और विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स एंड आयोडीन, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, मैम इट कॉज गोइटर एंड मैम आयरन की कमी cancer, से asthma, diabetes, obesity, these all are also non-communicable disease, and deficiency of iron causes अनीमिया anemia. So these all are called non-communicable disease. Okay, the rabies virus is carried by, who will tell me? Rabies means rabies is a virus which can spread from an infected animal's saliva. Means एक infected animal के saliva से फैलती है rabies की बीमारी. This is a virus in which you got headache, fever, mental illness, nervous system breakdown. So this is carried by the saliva of infected animal. Which infected animal? Can you tell me? Sanjay, tell me the answer. Sanjay. मैम डॉग्स। डॉग्स, वेरी गुड. डॉग के बाइट करने से या फिर स्क्रैच कर लेने से क्या हो जाता है? रैबिज. रैबिज एक वायरस है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल टू वन पर्सन में स्प्रेड हो जाता है. Second is milk turning sore is a. First of all, you will understand what are physical and what are chemical change. Physical change are those change in which the material which can be reversed, and chemical change are those changes in which the material cannot be reversed. Means जो things दोबारा नहीं वैसे हो सकते हैं. Like chemical change में if I melt, Havish, if I melt ice into water, is it it can be reversible or not? If I melt यस मैम। ice into water and if I want to convert that water into ice, is it can be converted or not? यस मैम। Very good. अगर आपको कोई वैक्स है, if I melt a wax, is it convertible? Is it reversible? नो मैम, नो मैम। Yes, it is reversible. Means the melting of anything will be reversed, but if anything will be burnt, अगर हमने किसी चीज को जला दिया है वो दोबारा वैसा नहीं हो सकता. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने एक पेपर को बर्न कर दिया है, हाविश, क्या वो कन्वर्ट होगा बेटा? नो मैम। नो. अगर बेटा एक स्मॉल बेबी है, वो एक यंग वन एडल्ट बन गया है, क्या वो दोबारा बेबी बन सकता है? नो नो मैम, नो मैम। No. So these are chemical change, means which are not reversed, are called chemical change. And what are physical change? The things which can be मैम जो reversed again. कन्वर्ट हो सकता है मैम। Very good. Like water changes into ice, ice can change into water. It is a physical change. But what is a Yes, ma'am. chemical change in which the substance which cannot be reversible? Like if I cook the vegetables, it can be reversible or not? Havish, if I cook vegetables, they can be reversed or not? नो मैम। No. If something I eat banana, like it will be digested in our body. It can be reversed or not? क्या वो reverse हो सकता है? नो नो मैम। No. So these are the chemical change. Now, can you answer this question? Milk turning. अगर बेटा milk एक बार खट्टा हो गया है, क्या वो दोबारा वैसा हो सकता है? Milk वैसा बन सकता है? No, Which ma'am. changes it? कौन सा चेंज होगा बेटा वो? मैम केमिकल चेंज। मैम मुझे आपसे एक सवाल पूछना था वेट कि बेटा, मैम if फिजिकल milk चेंज। is wait बेटा, if milk is turning into curd, that is a physical change or a chemical change? मैम केमिकल चेंज। Chemical change. Very good beta. I will take your doubt in the last 10 minutes. Okay, first of all we will do this, then I will take your doubts. Next question. The wearing off or carrying away of soil by the action of water or wind is called. Means soil का transport हो जाना one place to another
that is called a storm, a flood, सॉइल इरोजन और डिफोरेस्टेशन। अब जहां से ट्रांसपोर्ट होगी बेटा सॉइल, वहां पे प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे, तो एक तरह से ये लॉस ऑफ सॉइल है। सो कृतिक, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? द वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड, it is shown in the figure also. Ma'am, soil erosion. That Ma'am, is soil called erosion. soil erosion. Very good. Its answer is C. It is soil erosion. Okay. Our next question is question number 6. Whales and dolphins are classified as. Devansh, tell me the answer. Whales and dolphins are reptiles, mammals, amphibians. What will be the answer? Your voice is not audible. Nigel, answer this question. Okay, Abhay Malik, answer this question. Abhay. Ma'am, mammals. Mammals. What are mammals, beta? Can you tell me? Ma'am, Who can tell me what are mammals? Amandeep Singh, tell me what are mammals? Ma'am, mammals are that animal that do not lay egg, that give birth to animal. Very good. The animals which do not lay eggs, which give birth to a young one. And what are amphibians? Amphibians are those animals which live in both water and land. Very good. Which lives on both land and water. Kritik, what are reptiles? Ma'am, the organisms which don't have legs and move with scales are known as reptiles. Very good. They can crawl. Okay. So its answer is whales and dolphins are the aquatic mammals. These are the mammals which give birth to a young one. So its answer will be C. Okay. Next question number 7. The working of the internal organ of our body is controlled by this system. Means हमारी अंदर वाली body का हर एक function, like blinking of eyes, our thinking process, our reflex actions, our respiratory system, circulatory system, our reproductive system, our digestive system, our excretory system. So whole process is performed by. Lakshya, tell me the answer. Lakshya, what will be the answer? The working of internal organ of our body is controlled by this system: reproductive system, circulatory system, respiratory system, or nervous system. ma'am, respiratory. No. Tejas, can you answer this question? Lakshya, you were busy in playing with the kids. You are not concentrated in the class. Yes, Tejas, tell me the answer. The whole system, like our Uttam, our reproductive, circulatory, respiratory, excretory, our every function is controlled by. Very good. It is controlled by our nervous system. Okay, these all nerves can control this whole system. So its answer is D, nervous system. Okay, it is controlled by our nervous system. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।